हेलो दोस्तों, टैक्स और वेल्थ में आपका स्वागत है। मैं हिमांशु कुमार और आज हम बहुत ही डिफरेंट टॉपिक पे एक हमारे मित्र चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आईएम के पास आउट हैं, तो उनसे हम ब्लॉकचेन पे बात करेंगे। तो ऐश्वर्या गुप्ता जी हमारे साथ हैं। पहले इनके बारे में मैं थोड़ा ब्रीफ बता दूं कि ब्लॉकचेन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि ऑडिट में ब्लॉकचेन की क्या यूटिलाइजेशन हो सकती है फ्यूचर में। करंट में भी बहुत चीजें हो रही हैं, तो उस पर ये पूरा डिबेट है और उसी पे पूरी चर्चा है। तो ऐश्वर्या के जो बैकग्राउंड है, बाय प्रोफेशन इज चार्टर्ड अकाउंटेंट, लेकिन इन्होंने कोलकाता आईएम से पास आउट हैं। वहां पे उन्होंने एमबीए कोर्स किया हुआ है, कंसल्टेंट हैं। इन्होंने जो एक्सपीरियंस, वास्ट एक्सपीरियंस है, पीडब्ल्यूसी में इन्होंने काम किया है, एमएक्स में काम किया है। और एमएक्स का एक फाइनेंस विजनरी अवार्ड होता है, जो एमएक्स का सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड होता है फाइनेंस में, वो भी इन्हें मिला हुआ है। उसके अलावा ब्लॉकचेन में ये बहुत काम कर रहे हैं। ब्लॉकचेन में कंसल्टेंट भी है, बहुत तरह की अपनी सर्विसेज भी दे रहे हैं। खैर ऐश्वर्या, अगर आप इस पे थोड़ा और बताएं कि आपका बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि थोड़ा सा जो टेक्निकली हम लोग देखते हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं उससे थोड़ा डिफरेंट आपका बैकग्राउंड है, तो अगर आप थोड़ा ब्रीफ करें तब हम आगे बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल सो as you have already said कि आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट सो आई completed my chartered accountancy in May 2018. उसके बाद I was working in developing some of the solutions for my company, for my previous company which was American Express. And वहाँ पे जब मैं ये कुछ सॉल्व कर रहा था तो क्रॉस बॉर्डर के सॉल्यूशंस ढूंढ रहा था। वहाँ से आई स्टार्टेड माय जर्नी ऑफ ब्लॉकचेन। एंड ब्लॉकचेन इज नॉट, यहाँ पे ब्लॉकचेन में द बिगेस्ट मिथ पीपल हैव इज कि ब्लॉकचेन केवल उन लोगों के लिए है जिनको कोडिंग आती है या बिना कोडिंग के हम ब्लॉकचेन से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो वो चीज़ बहुत लोगों के दिमाग में थी, लेकिन मैं उसमें और डीप भी किया तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ज़्यादा एक चीज़ होती है, कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है, कोई भी नई इंडस्ट्री डेवलप होती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है फाइनेंस प्रोफेशनल्स का भी रोल जितना एक टेकी का रोल होता है। तो वो चीज़ मैंने एक्सप्लोर करना शुरू करी। मैंने काफ़ी स्टार्टअप्स के संग वर्क करना शुरू किया बैकएंड में। वो लोग जो भी काम कर रहे थे ब्लॉकचेन के ऊपर, कैसे प्रोजेक्ट्स बना रहे थे। फिर मैंने काफ़ी कोर्सेज किए ब्लॉकचेन के ऊपर। आईएम से ब्लॉकचेन के ऊपर मैंने एक और कोर्स किया। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, मैंने काफ़ी स्टार्टअप्स में वर्क किया, समझने की कोशिश करी कि कैसे ये टेक्नोलॉजी वर्क करती है, कैसे क्या चीज़ें होती हैं। एंड फिर क्योंकि एजुकेशन अगर इंडिया में देखी जाए तो काफ़ी महंगी है ब्लॉकचेन की। कोई भी कोर्स अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट से करते हैं तो 3-4 लाख रुपए कहीं भी नहीं जाते हैं। तो मुझे लगा कि इस टेक्नोलॉजी को एक ऐसे रेट पे लेके आना चाहिए बिकॉज इससे यूथ जो है इंडिया का एक काफ़ी अच्छी एम्प्लॉयमेंट लेवल पे पहुंच सकता है। बिकॉज यहाँ पे जब आप जाते हैं तो यहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो मुझे दिख रही हैं जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, कि आप कोई उसका एंड नहीं है। तो आई वॉन्टेड मोर पीपल टू गेट इन, सो आई स्टार्टेड माई एजुकेशन वेंचर जहाँ पे मैंने कोर्सेज निकाले स्किल 91। तो वहाँ पे मेरे कोर्सेज मैंने लिस्ट किए। फिर एज अ कंसल्टेंट आई गो टू कंपनीज वेयर आई टेल देम whether blockchain is a solution where that should be implemented, and blockchain is not single solution कि भाई ब्लॉकचेन लगाना है तो ब्लॉकचेन लगाना इज नॉट द आंसर। ब्लॉकचेन कौन सी ब्लॉकचेन यूज करनी है, बिकॉज हर ब्लॉकचेन अलग अलग तरीके से डेवलप होती है और हर यूज केस ब्लॉकचेन का अलग अलग है। तो फिर वो कंसल्ट करना। फिर टैक्सेस, क्योंकि इंडिया में कोई टैक्स के रूल्स नहीं है, लॉज नहीं है, और ब्लॉकचेन के टैक्सेस जो क्रिप्टो के टैक्सेस होते हैं बेसिकली वो बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं कैलकुलेट करने। तो ये सब चीज़ें मैंने स्टार्ट करी। चलिए, बहुत अच्छा। इट्स रियली इंटरेस्टिंग कि एक नया डोमेन है, नई इंफॉर्मेशन है हमारे लिए भी, और आज हमारे व्यूअर्स को भी एक नया इंफॉर्मेशन मिलेगा। प्लीज, तो बिल्कुल। आप स्टार्ट करें। आपका पीपीटी मैं शेयर कर रहा हूँ। यस। तो एज अ ब्लॉग जब भी मैं किसी भी फोरम में जाता हूँ सबसे पहले मैं ये 2 फोटोज दिखाता हूँ। फोटोज दिखाने का मेरा केवल और केवल इंटेंशन ये रहता है, मुझे ये जानने की हमेशा कोशिश करना होती है कि दो दो इमेजेस आपके सामने स्क्रीन पे दिख रही हैं, वो दोनों इमेजेस क्या है। मतलब वो दोनों इमेजेस सेम हैं या वो दोनों इमेजेस डिफरेंट हैं। मतलब ये दिस इज समथिंग विच आई वांट टू नो फ्रॉम द ऑडियंस। इफ यू कैन से इफ दे आर सेम यू कैन से यस, इफ दे आर नॉट सेम से नो। प्लीज जो देख रहे हैं, अगर आप कमेंट करें तो अच्छा रहेगा, जो ये पूछ रहे हैं, सो दैट कि क्लियरिटी और इंटरेक्शन भी उस हिसाब से बना रहे। सो इन दोनों इमेजेस का मैं आंसर बताता हूँ क्या है। ये दोनों इमेजेस सेम है। अगर आप दोनों को गौर से देखेंगे तो बोथ द इमेजेस आर सेम। इसमें कुछ आंसर आए, आप देखें। हाँ, ओके, yes, no, okay. So basically the thing that I want to say is both the bridges are same. The only reason why I show this image is these bridges represent our knowledge base.
कि हमको कितनी नॉलेज है, नो मैटर हम किस लेवल पे हैं, हम एक मे बी बिगिनर लेवल पे हैं या हम हो सकता है बहुत एडवांस लेवल पे हैं, हमारे पास नॉलेज बहुत है। लेकिन टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है, जो टेक्नोलॉजी जब आती है तो टेक्नोलॉजी आपकी नॉलेज नहीं, आपकी अपग्रेडेशन देखती है, कैसे आप उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके अपनी नॉलेज को यूज़ कर सकते हैं। सिमिलर यही वाला केस है, पहले हॉर्नबिल ब्रिज जो था, जो उसका यूज केस क्या था, दैट वाज बीइंग यूज्ड एज अ ब्रिज टू मूव फ्रॉम वन पोर्शन ऑफ द सिटी टू अनदर। अब पैराडाइम चेंज हो गया है, पानी जो है वो उधर खिसक गया है, तो ब्रिज अभी भी कायम है, विच इज नॉलेज हमारे पास अभी भी है, बट टेक्नोलॉजी जो है वो टेक्नोलॉजी चेंज होने की वजह से अब इस ब्रिज का कोई यूज केस नहीं रह गया। सो विद दैट बहुत सारे लोग हैं ये जो जो मेरे पास ये सवाल लेके आते हैं कि सर मैंने तो 5 साल ये कर लिया, मैंने तो 10 साल ये कर लिया, मैंने तो 30 साल ये कर लिया है, अब मैं क्या, अब ब्लॉकचेन मेरा क्या कर लेगा, या टेक्नोलॉजी, नॉट ब्लॉकचेन बट टेक्नोलॉजी मेरा क्या कर लेगा। सो इट्स जस्ट दैट टेक्नोलॉजी जैसे जैसे अपग्रेड होती है, अगर हम लोग साथ में अपग्रेड होते हैं तो हमें उसका फ़ायदा मिलता है, और अगर हम उसको साथ में नहीं लेके जाते हैं तो प्रॉब्लम ये हो जाती है कि वो वहाँ से टेक्नोलॉजी आपका जो भी यूज नॉलेज है वो उसको यूजलेस कर सकती है। सो विद दैट आई ओपन माय सेशन, एंड सबसे पहले हम ये कोशिश करने की या समझने की कोशिश करते हैं कि ब्लॉकचेन आया क्यों, मतलब ब्लॉकचेन की ज़रूरत क्या थी या ब्लॉकचेन क्यों लाया गया। तो इंटरनेट से इसका यू कैन से इट वाज स्टार्टेड। तो इंटरनेट व्हेन वी वर देयर ऑन द इंटरनेट वी वांटेड टू अंडरस्टैंड, और इंटरनेट एक तरह से 4 डेकेड हो गए। तो 4 डेकेड में इंटरनेट ने हमको क्या क्या दे दिया है, 4 डेकेड में इंटरनेट ने हमें ईमेल्स दे दिया है, .com वर्ड दे दिया है, वर्ल्ड वाइड वेब दे दिया है, सोशल मीडिया दे दिया है, मोबाइल वेब दे दिया है, बिग डेटा दे दिया है, ये सारी चीज़ें दे चुका है। तो उससे हमको बहुत फ़ायदे भी हुए हैं। क्या फ़ायदे हुए हैं, सबसे ज़्यादा एक तो सबसे बड़ी बात, हमारा सर्च करने की कॉस्ट कम हो गई है। कोलैबोरेशन हम लोग बहुत इजीली इंटरनेट के थ्रू कर सकते हैं, तो हमको किसी दूसरे के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, हम एक्चुअली ऑनलाइन बैठ के ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। एंड जो भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है वो भी आज बहुत स्विफ्ट है। आज अगर कोई यूएस में मुझे कुछ बताना चाहता है तो वो इन्फॉर्मेशन के लिए मुझे अलग से यूएस नहीं जाना पड़ेगा, मुझे घर पे बैठ के मैं वो चीज़ें ले सकता हूँ। तो इंटरनेट हैज़ गिवन अस ऑल दीज थिंग्स, लेकिन देयर आर सम थिंग्स ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट वाज गुड जब हमको इन्फॉर्मेशन मूव करनी थी। अब अगर हमें इंफॉर्मेशन के साथ साथ मनी मूव करनी है, असेट्स मूव करने हैं, या हमको क्या कहते हैं, जो भी चीज़ फिजिकल एसेट है उसको डिजिटली मूव करना है, तो उसको हम इंटरनेट के थ्रू नहीं कर सकते। और दूसरी बात, अगर हम जब भी हम इंटरनेट पे ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं तो हमको ये नहीं पता होता कि हम किसके संग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हमने पैसा भेज दिया क्योंकि किसी ने कहा था, या कोई थर्ड पार्टी हमें बीच में आके ट्रस्ट बिल्ड करती है। लाइक अगर आपको फॉर एग्जांपल मुझे किसी चीज़ के लिए पेमेंट करना है, तो यू नीड पेटीएम, यू नीड पेपैल, यू नीड ऑल दीज थर्ड पार्टीज जो आपका सारा डेटा कलेक्ट करेंगी और उसके बाद ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कर देगी। तो आइडेंटिटी मुझे नहीं पता चलेगी, मे बी उस थर्ड पार्टी को पता चल जाएगी, बट मुझे नहीं पता चलेगी। आई डोंट नो whom I am talking to। सेकेंड इज, हम जब किसी को यही नहीं समझ सकते कि हम किसके संग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो हम उस पर ट्रस्ट कैसे करें। जब हम उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं तो प्रॉब्लम इज, जब हम ट्रस्ट नहीं कर सकते तो हो सकता है जो हमारी बिजनेस के लैंडस्केप इंटरनेट ने खोले हैं वो एक तरह से सीमित रह जाए, बिकॉज अभी भी हम उसको उस इंसान के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते क्योंकि इंटरनेट ने हमें वो कैपेबिलिटी नहीं दी। और उसके बाद इतने सारे स्कैम्स होते रहते हैं, जो स्कैम्स को देखते हुए भी हम लोग काफ़ी कॉशियस रहते हैं इंटरनेट के ऊपर। एंड द लास्ट एंड द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज, अभी भी इंटरनेट ने बोला था कि हम सबको फाइनेंशियल इंक्लूजन का पार्ट बना देंगे। फाइनेंशियल इंक्लूजन इज बेसिकली वेयर पीपल आर कनेक्टेड टू द बैंक्स एंड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑफ द गवर्नमेंट थ्रू विच द मनी कैन फ्लो फ्रॉम हियर एंड देयर। तो स्टिल देयर आर अराउंड 2.5 बिलियन पीपल हु आर नॉट इन दीज फाइनेंशियल सिस्टम्स। अब वो कहीं भी हो सकते हैं, वो इंडिया में भी हो सकते हैं, वो अफ्रीका में भी हो सकते हैं, वो कहीं भी हो सकते हैं, बट देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल। लेकिन इन लोगों के पास भले ही बैंकिंग फैसिलिटी नहीं है, लेकिन इनमें से 2/3 के पास मोबाइल फोन्स हैं जो कि इंटरनेट से, इंटरनेट जिसमें चलता है, वी मीन्स दीज आर स्मार्टफोन्स दैट दीज पीपल possess. If these people possess smartphones, if these people have the internet, is there a way, even without the financial systems or banking systems, we can create the amount of trust so that people can go ahead and people can earn from it, or people can transact and they become a part of financial systems? Now this is the whole requirement that was being sought out कि इसको कैसे सॉल्व करें, इसमें कैसे करके। तो इसी के लिए we got a solution called blockchain. अब समझने के लिए ब्लॉकचेन की मैं डेफिनेशन बोल सकता हूँ, बट डेफिनेशन तो आप गूगल से भी कर सकते हैं। तो व्हाट एग्जैक्टली इज अ डिफरेंट थिंग दैट आई कैन टेल यू, जिससे आपको हमेशा याद रहेगा कि ब्लॉकचेन क्या होता है। चलिए एक बहुत ईजी सा एग्जाम्पल लेते हैं, एक ऐसा एग्जाम्पल जो आपने 101% जिसके थ्रू पास ऑन हुए होंगे।
इफ़ यू आर अ स्टूडेंट तो कॉलेज में या स्कूल में, इफ़ यू आर अ प्रोफेशनल इन योर अर्ली लाइफ, मे बी योर न्यू मीटिंग्स विद द बॉस और योर न्यू आउटिंग्स, या फिर अगर आप बहुत ही सीनियर है तो गेट टुगेदर्स, गैदरिंग्स जो प्रोफेशनल होती हैं वो। अब जब ये सारी मीटिंग्स होती हैं, ये जब भी ये कोई इवेंट होता है, कुछ भी होता है, तो हमेशा जब हम कंट्रीब्यूशन देते हैं अपना, तो हमें ये लगता है कि हमने कंट्रीब्यूशन तो इतना दिया है लेकिन इतना खर्चा हुआ नहीं होगा, पक्का किसी ने पैसे मार लिए होंगे। ये एग्जांपल दे सकता हूँ एंड आई बिलीव आप लोगों ने ये चीज़ कभी ना कभी तो फील करी होगी। इफ़ यू हैव फेल्ट इट, एक बार यस लिखने से आई जस्ट नो कि यू गाइज आर एक्टिव। So I think I've got some replies. Okay, so basically what I want to say is यहाँ पे okay, yes, correct, okay, so basically exactly that is what I want to say here. So ऐसी चीज़ होती है तो हम क्या कर सकते हैं, मतलब अगर हम कॉलेज या स्कूल लाइफ में हैं तो हम ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें ये सारे एक्सपेंसेस हम लिख सकते हैं, तो या फिर हम एक गूगल शीट बना लेते हैं, सबसे सिंपल, बिकॉज एवरीवन नोज व्हाट अ गूगल शीट इज। गूगल शीट बना के हम एक काम करते हैं, जैसे अब इसको एग्जाम्पल को थोड़ा सा छोटा करते हैं, लेट्स से 5 लोग थे जो पार्टी करने जा रहे थे या मूवी देखने जा रहे थे। जब वो मूवी देखने जा रहे थे तो ऐसा नहीं होगा कि हर इंसान अपने लिए 500 रुपये दे दे के टिकट खरीदेगा। कोई एक इंसान उनके लिए टिकट खरीद लेगा, कोई एक इंसान खाने का पैसे दे देगा, कोई दूसरा इंसान क्या कहते हैं हो सकता है आने जाने के पैसे दे देगा, और बाद में सबको टोटल करके डिवाइड करके बांट दिए जाएंगे पैसे। तो अब इसमें ये वाली फीलिंग ना आए कि किसी ने मेरे पैसे ज़्यादा चुरा लिए। हमने क्या किया, गूगल शीट बना ली, उसमें सबके गूगल अकाउंट डाल दिए। अब क्या हम कर रहे हैं कि जितना भी डेटा है वो डेटा को उठा के, मतलब किसी ने टिकट का पेमेंट किया, उसने गूगल शीट में अपलोड कर दिया, उसने बगल में गूगल शीट में अपलोड करने के बाद वहाँ पे क्या कहते हैं एक तरह से वो दे दिया कि ये वाला बिल लगा हुआ है, ये देखो मेरी रिसीट है, तो दिस इज अ डेटा, दिस इज ऑथेंटिक। अब उसके बाद ऐसे सेकंड ने किया, ऐसे थर्ड ने किया, और जब पूरा हम लोगों का आउटिंग खत्म हो गया तो एंड में हम लोगों ने देख लिया किसने कितने पैसे दिए थे, सबने अपना प्रूफ लगा दिया था, सब कुछ हो गया। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि पहली बात, ये तो सर्वर पे किसके सर्वर पे सेव है, ये सर्वर पे सेव है गूगल के। अब गूगल ऑब्वियसली हमारा डेटा फिडल नहीं करेगी, लेकिन उसके पास पावर है उस डेटा को डिलीट, एडिट, मॉडिफाई करने की, या उसको कुछ भी उस डेटा को गायब कर देने की, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये डेटा एक सेंट्रलाइज सर्वर पे है, एंड मोस्टली जितने सर्वर्स हैक होते हैं वो 99% सेंट्रलाइज सर्वर्स होते हैं, तो आपका डेटा हैक भी हो सकता है ना। अभी यहाँ तो फाइनेंशियल डेटा नहीं था तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अगर ये फाइनेंशियल डेटा होता तो आप क्या करते? तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ कि फाइनेंशियल डेटा को की वजह से आपका फाइनेंशियल डेटा का लॉस भी हो सकता है। अब इसको मैं कंपेयर करता हूँ ब्लॉकचेन से। व्हेन आई कंपेयर इट विद द ब्लॉकचेन, आई हैव टू टेक अ एग्जांपल टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज ब्लॉकचेन, बिकॉज नॉट ऑल द ब्लॉकचेन्स आर एग्जैक्टली सिमिलर, दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लॉकचेन्स यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीचर्स, बिल्डिंग ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। तो सबसे सबसे ईजी वन या सबसे पहले जो आया था उसकी बारे में बात कर लेते हैं, बिटकॉइन। तो बिटकॉइन इज अ ब्लॉकचेन नेटवर्क जहाँ पे हमने क्या किया, कोई भी डेटा जो हमने जैसे गूगल शीट में अपलोड कर रहे थे, तो सबसे पहले मेरी प्रॉब्लम क्या थी, उसको डेटा को एडिट कर सकते थे, डिलीट कर सकते थे, मॉडिफाई कर सकते थे। कोई भी चीज़ अगर मैंने ब्लॉक पे लिख के ब्लॉकचेन पे ऐड कर दिया है, तो ना तो मैं उसको एडिट कर सकता हूँ, ना मैं उसको डिलीट कर सकता हूँ, ना मैं उसको मॉडिफाई कर सकता हूँ। मैं केवल एक काम कर सकता हूँ, मैं उस पर और डेटा ऐड कर सकता हूँ। अब इसको अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज में अगर आप देखेंगे या ऑडिट की टर्मिनोलॉजीज में देखेंगे, तो दिस इज समथिंग वेयर you don't need anyone to come ahead and to certify कि भाई ये डेटा सही है। Why? Because the blockchain is enabling that. You cannot insert the data in between. You cannot modify the data. You cannot delete the data. You cannot do any such thing. You can just add data. If you have entered one thing, after this data only you can add another data. So जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है विच इज कि भाई कोई भी डेटा चेंज कर सकता है और कोई भी डेटा मैनिपुलेट कर सकता है, दिस इज गॉन इन ब्लॉकचेन। सेकंड इज हैकिंग, जो सेंट्रलाइज सर्वर की बात करते थे। अगेन इफ आई टेक द एग्जांपल ऑफ बिटकॉइन या ब्लॉकचेन्स में, क्योंकि बिटकॉइन वाज द फर्स्ट वन, एंड इफ आई टेक द एग्जांपल ऑफ बिटकॉइन, व्हाट हैपेंस देयर इज वी हैव 100,000 नोड्स, मीनिंग जो डेटा हमारा एक सर्वर पे सेव हो रहा था गूगल पे, हाँ विद गूगल यू विल हैव ऑन साइट्स, हॉट साइट्स, वार्म साइट्स, वो सब बैकअप होंगे डेटा के, बट वो ओरिजिनल डेटा नहीं होगा। यहाँ पे हम ओरिजिनल डेटा की ही कॉपी जो है वो अराउंड 100,000 लोगों के पास या 5,000 या 10,000 लोगों के पास अलग अलग जगह सेव कर रहे हैं। तो अगर हम वही सेम डेटा
जो है वो अगर अलग अलग जगह के सेव कर रहे हैं, तो हैक करने के लिए क्या होगा, या अटैक होगा तो एक सर्वर पे होगा, 2 सर्वर पे होगा, 3 पे होगा, 4 पे होगा, एक साथ 10,000 सर्वर्स पे अटैक नहीं हो सकता है, बिकॉज एक तो ये पूरे ग्लोब में बैठे हुए हैं, पूरे ग्लोब में डिस्ट्रीब्यूटेड है, एंड एक पॉइंट ऑफ टाइम पे इतना बड़ा अटैक करना इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आई एम नॉट सेइंग इट्स इम्पॉसिबल, आई एम सेइंग इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो आपका ये वाला डेटा, ये वाला इशू भी खत्म हो गया कि कोई डेटा को हैक करके वहां से डेटा गायब कर सकता है। यहाँ पे डेटा चाहे एक को हैक करेंगे, 2 को हैक करेंगे, 3 को करेंगे, बट इतने डेटा सोर्सेज हैं कि आप वहां से फिर किसी और को हैक नहीं कर सकते। तो दैट इज द सेकेंड थिंग। उसके बाद मैनेज बाय क्लस्टर ऑफ कंप्यूटर्स, यहाँ पे सेंट्रलाइज सर्वर्स उसको मैनेज कर रहे थे। यहाँ पे जैसे मैंने बोला अलग अलग नोड्स होती हैं, या अलग अलग नोड्स पे सारा डेटा जो है वो जाके सेव रहता है। फिर उसके बाद इट्स नॉट ओन्ड बाय अ सिंगल एंटिटी। Blockchains, if I talk about public blockchains, they are not the property of any single individual or a single company. They are out in the open where you and I can go ahead, can participate, can take action, and all those things. So we are not going, and it's not under control of anyone. So here what we have created a timestamp series, because आप data एक बार लिख देंगे तो उसको आप edit या कुछ भी नहीं कर सकते हैं। Immutable records हैं, जिसकी वजह से आपको proper audit trail मिल रही है। ऑडिट ट्रेल मिलने के साथ साथ आपको उस पर ट्रांसपेरेंसी भी मिल रही है, एंड आपके डेटा को हैक नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो डेटा एक जगह नहीं, मल्टीपल सर्वर्स पे सेव्ड है, एंड इट्स नॉट ओन्ड बाय अ सिंगल एंटिटी जो कल को डाउन हो गई तो हमारा पूरा डेटा डाउन हो जाए। वेयर यू हैव सीन, लाइक फॉर एग्जांपल, कि कभी यूट्यूब डाउन हो गया, कभी गूगल डाउन हो गया, कभी कुछ भी डाउन हो जाता है। सो दीज आर सेंट्रलाइज सर्वर्स जो डाउन हो जाते हैं यहाँ पे, बिकॉज दीज आर डिसेंट्रलाइज सर्वर्स, एंड दीज आर, अगर एक डाउन होगा तो देयर आर अ लॉट मोर विच आर स्टिल वर्किंग, तो देयर इज नो ऑलमोस्ट जीरो डाउन टाइम। सो दैट इज व्हाट इज ब्लॉकचेन। एंड जितने भी ब्लॉक हम ब्लॉकचेन पे ऐड करते जा रहे हैं, ये क्रिप्टोग्राफी इज द आर्ट और इज द वे इन विच यू सिक्योर द डेटा, सिक्योरिटी मैकेनिज्म समझ सकते हैं उसको। तो ईच ऑफ दीज ब्लॉक्स ऑफ डेटा इज सिक्योर्ड एंड बाउंड टू ईच अदर यूजिंग द क्रिप्टोग्राफिक प्रिंसिपल्स, hence the word blockchain. Again, the blockchain network has no central authority. It is shared and immutable ledger. The information in it is open for anyone and everyone to see. Yes, anyone and everyone can see the data. If I go right now, want to go ahead and I want to show you the data which is available on the Bitcoin network, you can download from the first transaction that ever happened there to the transaction at the time you were downloading. It would be somewhere around 350 GBs of data, but you can go ahead and you can download 100% of that data. So where you in centralized servers where you can lose the data, where it might catch a fire if it is physical data and all those things, तो वहाँ पे सब जल सकता है, सब बर्बाद हो सकता है, नेचुरल कैलामिटीज आ सकती हैं। यहाँ पे जब तक पूरे वर्ल्ड में ऐसी कैलामिटीज नहीं आती, योर डेटा इज स्टिल सिक्योर एंड स्टिल ऑनलाइन। तो कंपनीज के जितने भी रेगुलेशन है कि 7 years you have to maintain the books and all, ये लाइफ टाइम के लिए डेटा मेंटेन्ड है। So that is something that is available on the blockchains. So and the info, but there's one more thing. अगर if you think that ये data open है तो कोई भी इसको देख सकता है, कोई भी इसको समझ सकता है, no. Until and unless you know certain specifications about this type of data, it will be jibber jabber. मतलब कुछ भी random words या random numbers use करके उन data को बनाया जाएगा, जिसकी वजह से आप उसको देख तो सकते हैं, लेकिन आप उसको ये नहीं बता सकते कि किसने ट्रांजैक्शन किया। So उसके लिए you either need to know whose address is that, or if on which block you have saved the data, या फिर कौन सी उसकी transaction ID है, वो सब आपको पता होना चाहिए। So that is why यहाँ पे all these transactions that are happening, you would have seen two things. One is where we are getting transparency. The second thing is हम intermediaries को हटा रहे हैं। क्यों? क्योंकि I did not need any other intermediary to maintain my data, to do anything on my data, and to provide me any services of the third party. सब कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, because blockchain is enabling all those things. Hence, it is also known as an intermediary killer. The blockchain technology will disrupt the disruptors of 21st century, that is Uber, Airbnb, YouTube, and these are just aggregators of shared economy, and blockchain disables aggregators. That is the core principle of it. If you know Mr. Mahindra, Anand Mahindra, so he was there in US for one conference, and he was talking to one of his associates, and when he was reading about blockchain, so he was talking to Jaspreet Bindra, and you can find out his TED talk as well on YouTube. And when he was talking about it, he said, Bindra, this technology is something, so in 21st century, all these car automakers and all, they were disrupted by Ola and Uber.
So they said this technology, Mr. Mahindra said that this technology can go ahead and this technology can disrupt the whole disruptor world. Now, we have understood कि चलो there is a record keeping and everything is there, सब कुछ है, ठीक है. क्या, what exactly or what more can blockchain give you? Now, there is another concept of blockchain which is known as smart contracts. अब smart contract क्या है? उसके पहले I'll just take any questions if you have. Otherwise, I'll just go and move to smart contracts. No, not right now. Okay. So this is basically what is blockchain, and blockchains के ऊपर there are certain blockchains which are enabled or which are able to run smart contracts on them. So there are a few enterprise solutions which are running smart contracts on them, and there are some public blockchains that are running on it. If you remember, if you have ever heard the name of Ethereum, so Ethereum right now hosts the biggest or the most smart contracts that are run on any system. So what exactly are smart contracts? I'll just give you an hint, or just give you an overview. Now, assume that you have a transaction. Let's say I want to pay you $1,200 every month on 1st of every month for the next 12 months. Okay, I had $1,200. I did not give you that $1,200 just as in. I took, let's say I'm giving you a retainership fees, which is for the next 12 months for 1 year. So हर महीने $100 I have to pay you. Now, how do you go ahead and how do you pay this? You will tell your accounts team, अच्छा इसको जो है ना हर महीने 1 तारीख को $100 भेज दें. अब अगर पहली तारीख को अकाउंटिंग टीम में जो ये ट्रांजैक्शन करता था वो बीमार पड़ गया, बैंक डाउन हो गया, तो योर पेमेंट्स विल नॉट बी प्रोसेस्ड. फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग इज आप बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो व्हिच विल कॉस्ट यू. Third is आपको there will be a need of escrow account because you are committing 1,200 though you are not giving those 1,200, so you will need an escrow account. Third is मतलब अगर बहुत बड़ा transaction है तो you might also include a lawyer so that he ensures that all the transactions are happening and there is no problem between the parties. Now all these people are just like third parties, and when these are third parties they will always charge you. Nobody gives you a free service. So if nobody is giving you a free service, what is happening is you are incurring costs, and even then there is not 100% guarantee that the money will be deposited on first every month to the account I have given out. Now enters smart contract. Now what does smart contract do? Smart contract is something which is just codes, and smart contracts are self-executing contracts with the terms of the contract between buyer and seller directly written on the lines of codes. And बहुत simple logic पे ये चलता है. What if then this? If this then that. तो बेसिकली मैंने उसको क्या करा, मैंने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को बोला कि आई एम गिविंग यू $1,200, तो द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट विल स्टोर माय $1,200 विद इन इट. कोई एस्क्रो अकाउंट नहीं खोलेगा, कोई कुछ भी नहीं खोलेगा. इट विल स्टोर $1,200 विद इन इट, एंड द नेक्स्ट थिंग दैट इट विल डू इज इट विल चेक एवरी मंथ when is the first of every month, and if I've told it कि every first of every month you have to make the payment, तो जैसे ही वो first की डेट आएगी वैसे ही ऑटोमेटिक ये पेमेंट्स होते रहेंगे, and these payments will go on till the next 12 months, and automatically फिर उसमें अगर आपको और कंडीशंस भी बिल्ड करनी है कि इसको पेमेंट तभी होना चाहिए जब इसने इतनी सर्विसेज दे दी हैं या इसने इतना काम कर दिया है, वो सब भी हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में इनबिल्ड कर सकते हैं. तो बेसिकली मैंने क्या किया, जो पूरी एक जो बुक आती थी कॉन्ट्रैक्ट की, हर कॉन्ट्रैक्ट की, इफ यू गो टू PSUs, उनके पास हर एक परचेज के लिए कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर आता है विच इज़ लाइक 50 और 100 पेजेस, और फिर उसको पूरा पढ़ना पड़ता है. फिर कहीं इंटरप्रिटेशंस में प्रॉब्लम होती है, किसी ने कुछ समझा होता है, वहाँ डिस्प्यूट्स क्रिएट होते हैं, फिर एक रिकंसिलिएशन टीम बैठाई जाती है, फिर एक डिस्प्यूट टीम बैठाई जाती है, फिर ऑल दीज थिंग्स, these are all intermediaries that are coming in between where you're spending money to ensure that your business is running smoothly. If I'm able to build all these things within the smart contract, there is no actual need for all these departments anymore. Matlab, the amount of people that were required, they will be required a lot lesser. Why? Because smart contract is doing that work for you. And even for accounting, you can tell the smart contract to do the accounting on itself. तो अगर वो जो $1,200 वाली एंट्री थी, अगर मैं इसको अपने, and SAP and Oracle are building this functionality already, where what will happen is as soon as $100 are moved from your smart contract or from this smart contract to the person's account, automatically there will be an entry that will be posted into the books of accounts. Now, if the code is right, meaning all the accounting entries also that are going into the books of account are 100% accurate. So today we do just a sample-based audit, and we do 10 different types of audits, and then also we just say that it is a sample-based auditing based on a limited
sample-based auditing or account or checking that we have done, we go out and give our reports. So here, 100% checking of data is possible. Okay, so that is what exactly the smart contract, and what are or how does a smart contract work? I've already told you. Two users create a smart contract. Now here, smart contract can be between two or more parties. You can have an unlimited number of parties. Second is all contract terms are written on code. I've already told you that. The third is smart contract is stored on a blockchain. So जैसे मैंने पूरा smart contract बना दिया, I'll deploy it on the blockchain solution, which is like right now I told you, Ethereum is one of the biggest use cases or one of the biggest platforms where you launch your smart contracts. And the fourth point is smart contracts execute itself when the events are triggered. So automatically, as soon as the events will be triggered, what will happen? These smart contracts will function automatically, and they will go ahead and they will create that effect automatically. I don't need any manual intervention anymore. So now you can simply imagine. Yeah, go ahead. Aishwary, can you check some questions? Yeah, I'll just do. On the screen. Sure. Will it give interest? Will it give interest for 11 months? Whenever you deposit your money in your current account, there is no interest which is given to you. And these are escrow accounts. So escrow accounts may be in right now also which you're working, you never get an interest. And any other question that we have? No. Okay. So interest is not given, but what you can also do is, like for example, instead of putting just $1,200, you can put, let's say, some other kind of a digital asset. Let's say whose value can appreciate. So if the value of that digital asset appreciates, so you might get something even more than just the interest. So that is something that you can do. Now moving ahead to the next one, what are the use cases of smart contracts? So there are a lot of use cases that have already been developed, and which ranges from record storing to trading activities to supply chains, mortgages, real estate market, employment agreements, copyright protection, healthcare services, retail payments, worrisome commerce, parametric contracts, algorithmic management, record storing contracts, government voting, healthcare, and these are all the things that have already been used. Like one of the use case that is being, the first one is retail payments. So let's say we have heard of smart people, we have heard of smart phone. Have we heard of smart money? We haven't. So basically here what is happening is there is something called a smart money. What is exactly smart money? So smart money is basically, this is a use case that has been developed in Singapore. So let's assume मेरा भाई जो है या मेरा भाई सिंगापुर में पढ़ रहा है. अब सिंगापुर में जब वो पढ़ रहा है तो उसने मेरे को कॉल किया, उसने कहा भाई मुझे $5,000 चाहिए, 5,000 सिंगापुर डॉलर चाहिए. मैंने कहा क्यों चाहिए? उसने कहा मुझे ट्यूशन की फीस देनी. देयर इज नो वे फॉर मी टू वेरीफाई कि भाई वो $5,000 की ट्यूशन फीस ही उसको देनी है कि नहीं देनी. He can use that money for whatever means he wants. Like right now, if I transfer that money into his account. Now what I do is I build a smart contract on it, and what I do whenever I'm transferring this money from my account to his account, I basically create a smart contract, and in that smart contract I put that $5,000, and I write on that smart contract that only if the payment is being made on the education stores, which so you can Google any store and you can find out whether it is an education, it sells educational stuffs, or it serves you anything which is served in a bar. So it can easily be detected from there. So what it will do, the smart contract, it will check whether all the data, whether you're making the payment, where you're making the payment. So I feed in that smart contract. He only use or only gets spent when this particular money is being used for educational payments. So let's say my brother still got $5,000 in his account, but there is a smart condition that I've built in. So as soon as, let's say, he makes the payment to an educational store or for his college or for his tuition fees, that money gets deducted from his account and the payment is made. But let's say he wants to go ahead and he wants to enjoy some and drink, let's say, at night. So what he goes to a club. As soon as he tries to make the payment through Google or through the internet of information that is available, what it can do is it will go ahead and it will detect that this is not an educational store. So if this is not an educational store, even if he has the balance, that balance will not move up. It will still be there in his account. It will say
that this is not the store in which I can be spent. Now, this is a very small use case which can be used, but imagine this use case if we deploy all these use cases in the charities where we donate, or in the government funds where we want to see, or in the budget where we want to see whether the allocation of money that has been done in the budget, or the allocation or the money that we have sent to these various initiatives of the government, where exactly is that money being used. So that is something that can be implemented, and this is already being used. So this is one of the use cases. Another one could be for record storing. So all the records that are there, all the accounting and everything that is happening, like I already told you, वो सब भी smart contracts के through हो सकता है. Reconciliation automation can also happen through it. Now, there is something of a concept called triple accounting system. Now, what exactly is triple accounting system? Is it something different from the double accounting system? The answer is no, it's not different. What exactly is there? There's only one thing different. So as soon as, let's say, there's a debit and a credit that is done, there is a third accounting entry that is passed on the blockchain ledgers that are being produced by IBM as of now. And Armanino is another firm which is trying to create this kinds of software. So here what will happen is, let's say, I want to go ahead and I want to buy some stuff. Let's say if I have to buy raw materials for myself. And when I have to buy those raw materials for myself, and I talk to the person from whom I am buying it, and I tell him, he quotes me a price of 1 lakh rupees. I say, okay, I will not give you 1 lakh rupees. Let's negotiate, and after negotiation, you feel that you have convinced him to go ahead and to do the transaction in 98,000 rupees. So what you do is, in your books of account, you do the entry at 98,000, but he is not convinced. उसने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या किया? उसने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 1 लाख रुपए ही डाले. There is a reconciliation problem there. अब जब यहाँ पे इसका इनवॉइस आएगा वो 1 लाख का आएगा, लेकिन यहाँ मेरे पास वो 98,000 का. So there is a problem here. इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? अलग अलग reconciliation teams बैठाते हैं. If you see the MNCs, they have huge reconciliation teams. There are like hundreds and hundreds of people doing reconciliation. Bank reconciliation is another thing. So all these things are there. Now here, with the help of smart contract, what it does is, as soon as you formally complete your negotiations, and here when you, in your books you enter 98,000, and in the other books he enters 1 lakh rupees. Today, in today's world, both these books are not talking to each other. ये अपनी बुक्स अपने बना रहा है, ये दूसरा वाला बंदा अपनी बुक्स अपनी बना रहा है. लेकिन with the help of triple accounting system, with the help of smart contracts, what it is doing is, वो बुक्स उनकी अलग ही रहेंगी, लेकिन ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है, ये इनकी बुक से भी कनेक्टेड रहेगा और इनकी बुक से भी कनेक्टेड रहेगा. जब इसने 98,000 की करी और इसने 1 लाख की एंट्री करी, तो ये इन दोनों को तुरंत ही वार्निंग दे देगा कि this is the transaction that you are doing, which is going to be not equivalent. So there will be a reconciliation that will start. So as soon as they get intimated, so they will both talk again to each other. Let's say they finalize the price at 99,000. Now both the people do the entries at 99,000. As soon as this entry is done, the smart contract will detect the debit is equal to credit, and it will pass a third entry onto itself or onto the solution that these companies like IBM are creating, and thereby certifying that this transaction has been finally recorded at 99,000. Now the benefit of this, first of all, there is no need for any person to do the reconciliation. Second of all, later on, if this book tries to manipulate the data, or this book tries to manipulate the data, because there is a third entry that has gone into the ledgers through the smart contracts in the software that have been built, so they will not let you do that. If you try to do that, what will happen? The seal of trust, you can say, or will be broken, and whereby what will happen is, both the parties will be intimated that there is a change that has been made. And this is something, first of all, if it is there completely on blockchain network, you cannot make the change. If it is semi-blockchain network, you can make the change, but both the parties will know. So this is how, in the accounting world, this is something which is going to change. Now these solutions are already being made. Big Fours are already making these solutions. IBM is already making these solutions. These are also getting deployed. There is a software called Nightingale, which has been deployed by EY in Norway. So they have already deployed it. So all these solutions are getting deployed slowly and steadily. And in the upcoming 3-4 years, we will see most of these bigger companies using these softwares. So this is, again, I can continue going on and on. What are the use cases of blockchain or smart contracts? But this is how this is done. All these things I've extensively discussed in the courses that I've done. But this is something which a smart contract does. And where exactly is the money flowing into the smart contracts? Where exactly is the money flowing on blockchains, basically? कौन से ऐसे इंडस्ट्रीज हैं, कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे ब्लॉकचेन
की तरफ पैसे जा रहे हैं. So the biggest use case of the biggest thing where the money is going is in finance and insurance. There's a whole new industry that is getting created, and I personally manage one of such industry, which is decentralized finance, whereby you get returns on these blockchains, which is just like a treasury setup where you invest in bonds and all those things. Similarly, you get returns on these particular decentralized financial systems. So this is the biggest one, which is finance and insurance. The second is information and communication. So today, all the information and communication that was done on the internet, that all the problems that I discussed on the internet, they are trying to get these problems solved. So these are two of the biggest places, almost 80% of these places, and 4% is professional services. So almost 82% is something which is getting deployed on these blockchain networks. Now, some other use cases which have already been used or which have already been deployed for banking and financial services. Today, I can go ahead and I can take a loan. I can lend my money, all these things on a blockchain without the need of any banks actually. I can complete my transactions for a real estate in Dubai. This use case is live, whereby I can just buy and sell any property within an hour. Within an hour. This process in India takes around 2 to 3 months. There you can complete this within 1 hour. Why? Because the government has created a portal whereby they've brought in all the intermediaries in between, like your Nigam services, your water and land taxes services, your stamp duty services, your insurance services, your mortgage services. Everything is there on one platform. So you can simply just go on that platform if you want to buy a particular property, see what exactly is the status of it, see who was the owner, who was the previous owner, and all the hierarchy of that, and you can simply go ahead and make the purchase within an hour. So that is how quick it has become. Healthcare, the third biggest reason for people that die on earth is because doctors do not get the information about the client at the right time. Now, this is one of the biggest problem that is there. Blockchain again is solving it by putting all those records on blockchain and creating black boxes whereby only the people whose data it is versus only the people who are curing these particular people will always have the access to all the data that is related to personal health records of any individual. Education, if you talk about certificates that are issued, everyone who has the certification, everyone who has the, you can say, college, he or she goes to college and a certificate is issued. We all know that there is a very big business of duplicate certificates that ongoes across the globe. And then you have, every time you have to change a job, every time you have to apply somewhere, you have to go through a lot of background checks and everything. So this is something again being put on blockchain, and my particular platform also uses these kinds of certifications. So all the certificates that we issue is put on the blockchain network, and then it is issued. So anytime, literally anytime, you can just go ahead, put the certificate name, and you can go ahead and you can check them. So that's there on the education front. Retail, I've already told you, retail payments. Transportation and ride sharing, Ola and Uber are trying. There are solutions which can compete with Ola and Uber that are already in place. Logistics, Walmart is using it. Logistics and supply chain management. Agriculture, Indian government along with World Bank is trying to create a system whereby they can pay the farmers as soon as their crop season is ruined because there was no rain or something like that. Those payments right now go through within 2 to 3 months or even 4 or 5 months. Now, this processing has been tested. It is somewhere around 12 hours within which you can get your payments in your bank accounts. So a lot of use cases are getting developed and are getting deployed on blockchain. There are some things that are still in process, like forecasting, stock trading, construction and mining, sports, human resources, insurance. Insurance is on both the fronts. Basically, some solutions have been built on insurance, some are yet to be built. So all those things are there, which are getting created on blockchain. Then let's say if you talk about insurance industry, so insurance industry, there are a lot of things which are being done, like for example, fraud prevention. If you have put something on the blockchain network, nobody can later on edit that data. Then streamlining routine interactions, risk prevention, on-demand insurances, reinsurances, micro insurances, P2P insurance. Now, P2P insurance does not almost exist in India. P2P insurance basically is whereby you can just go ahead and take the claim or take on insurance of some other individual. Let's say someone is traveling from one place to another and he applies for a P2P insurance, and you are someone who gives P2P insurance. So you can personally take his insurance. Okay,
I am taking this particular individual's insurance that he can go from here to there, and if there is a mishap that happens, so this is the amount of claim I'll be going at and be paying. So this is something that this is also evolving. The next is, if I talk about stock markets. So today the biggest problem with stock market is the settlements. So your settlements happen in T+2 days, and there are so many intermediaries involved. First, you have your demat account, and that demat account is with a broker. That broker has two types of account. One is a pool account, and the other is your demat account. So when you trade, all the trades are taken in the pool account first. After that pool account, what happens? उस pool account से सारा का सारा डेटा उठेगा, NSDL और CDSL जाएगा, वहाँ पे सेटलमेंट होता है उस डेटा का. सेटलमेंट होने के बाद फिर आपके जो पूल अकाउंट का डेटा था वो वहाँ से जाके आपके डीमैट अकाउंट में आता है. एंड दिस होल प्रोसेस फर्स्ट ऑफ ऑल इंक्लूड्स अ लॉट ऑफ इंटरमीडियरीज, एंड सेकंड ऑफ ऑल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, T+2 days. And other problems that are there is basically, let's say if I want to go ahead and I want to buy a share of MRF, 94,000 rupees का एक share है. I cannot, if I do not have, let's say I have 10,000 rupees, can I invest in MRF share? The answer is no. Why? Because you cannot have partial holdings of it. Another problem that we have is भाई stock market जो है वो चलता है, अगर इंडिया की बात करें तो 9:15 से 3:30. अगर मेरे को शाम को 6 बजे कोई स्टॉक खरीदना है, क्या मैं खरीद सकता हूँ? The answer is no. All these problems are being solved by blockchain here again, where blockchains, what they're doing is they're offering you partial holdings. They're giving you international holdings in the form of tokens. So let's say you want to invest in a share of Tesla today. So you have to go ahead and you have to have an international bank account, and you have to have a demat account in that, let's say in US, for example, which is like a Robinhood account. And then in that Robinhood account, you will go ahead and then you will deposit your money and all those things. So this whole process will take at least a week once you're setting this up. So, and if you want to do this right now, within 5 minutes, I can also go ahead and I can do the same thing on blockchains. So this is something which is evolving, where you can have partial ownership. If let's say again, I take the example of MRF share, I can just buy a 100 rupee worth of MRF share as well. So that is also something that is developing. There are platforms called Binance or FTX Exchange, which is trying to do that. So all those things are also evolving. And if I talk about like what are the use cases, if I talk about what exactly are the use cases for financial people, so here are some of the financial. I've already discussed it, but let me give it another detailed interaction. The first is audit and accounting. So I've already told you how the accounting, where all the manual accounting was done. A lot of automations are happening basically with the help of two technologies. One is RPA and the other one is blockchain. So RPA, what it does is it streamlines and lets you do it goes ahead and feeds the data automatically without human intervention. So let's say RPA is something whereby if you have a routine job, RPA can replace you any moment. So it's not something which is very expensive, something like that. It is very cost efficient or anything, and it can very easily be deployed. So that is what is RPA. So through RPA, if you have any routine jobs, those routine jobs can be done. And once the data is put on the, let's say, is fed on the systems, on the accounting systems, and let's say they are being run on blockchain software. So we already know how much transparency it gives, how good audit trail it gives. It gives you a near real-time data. So every time, let's say you have to, every quarter, you have to go ahead and file your returns. Here, you don't need to go ahead and do the audits again and again because the data is coming real-time. Yes, you will have to find out the mistakes that have been done. So I'm not saying you don't need people anymore. You need those people, but I'm just saying that this way, the need of those people, let's say today, the need of those people is, let's say 1,000. Tomorrow, the need for those people could be 100. Obviously, humans will always be needed no matter what technology comes in. So that is something that is there, but the demand on this particular front is going to reduce because these things can be done by the software itself today. So firms like Oracle, like I've already told you, Oracle, IBM, they're working on triple accounting system softwares. And instead of doing the audit of accounting entries, what audit you will be doing in the future is you will be doing the audit of smart contracts. So if the smart contract is correct, if the codes are correct, that means any entry that is flowing into the books is automatically correct. I'll take an example here again. Let's say you are the auditor of Airtel. So if you go ahead and Airtel on a daily basis, you go ahead and you place somewhere around 2 crore calls on maybe that's the number. So 2 crore calls, let's say you Airtel processes every hour or every day. Now you cannot go ahead and you cannot audit all those 2 crore calls. What you will do is you will sample out sample-based data. You will take out the sample-based data for every plan that exists, and you will check whether the accounting is happening properly or not. Now here, with the help of smart contract, what will happen? Those accountings will be passed through a smart contract,
where the conditions will be built in. So if you have using a 199 plan, so you will say these numbers are using 199 plan, so account accordingly allocate the amount of data to them that way, and accordingly when they're placing the calls and everything, do the accounting also that way. So here, what will happen if the smart contract is correct? All the accounting that has been done through the smart contract will automatically be correct. So instead of you can say doing audit of all the transactions, in future, in near future, you will be doing the audit of smart contracts. So that is for accounting and audit. Consultancy, again, these are the places. If you talk about Oracle and SAP consultant, so the blockchain consultant will also do something similar. What? So first of all, let's say if you will go ahead, you will meet the companies which are going ahead and onboarding these softwares, and then you will find out what exactly is the problem that they're trying to solve, whether that problem can be solved by which particular blockchain. Then you will go ahead and you will be a part of all those interactions that are going to happen. And later on, what is going to happen is, after your interactions as well, you will be able to go ahead and you will be able to give out your consultancy services. You will be a part of the detailed consultation, requirement gathering, and even the prototype making. So till here, the finance people will be there, will be needed very much. They'll be playing a very big role there. And maybe after the MVP, they can just they can work as testers, where all the, let's say, whatever the demand or requirement of the client was, let's say for the accounting software which they are developing on blockchain, let's say, so they will be checking whether all the accounting and everything is coming out as per the requirements of the client, and then they can finally hand over the project to the techies and take a lead. So that's one use case. Another is, let's say, central access granting systems. So here also, this is something which will come, but on a later date, where private blockchains come into picture, where corporates do not go on a public blockchain, they go on a private blockchain. And you need people to ensure that the data that is being fed is the access and everything that they are getting. So they are the right accesses. Anyone who is adding the data, he is exactly doing that properly and everything. So that is something that you also can go ahead and then as a consultant you can work on. Now, on the tax areas of direct and indirect tax, one of the biggest problems that we have in indirect tax is the theft of input credits. So there are bogus bills and everything, there are bogus entries, and every now and then we go ahead and we hear that, okay, this amount or this person has come out who had created bogus bills and everything. Now, when we attach blockchains with IoT devices, what happens is your accounting and everything that is happening on the blockchains, and with the help of IoT, you can actually in real time track whether the goods are actually moving or not, whether the bills that are authentic or not. How you can do that? If you have IoT devices installed in the premises or in the trucks and everything, which are moving from here and there and are taking or carrying your goods from here and there, automatically you will know that, yes, this is something where all the goods and services that are moving, they're actually moving. It's not something which is just a bogus entry. So it can help the authorities a lot to chain out or to find out all those people who are trying to create those bogus things. And that is something that is pretty cool to reduce all that input credit issues that are there. Reconciliation can also be eliminated here. Why? Because only the accounting entries will happen once the goods have been delivered. And so that reconciliation can also be taken care here. Yes, these things will evolve. This is not something which has evolved right now. This is something in the process right now. So there are some firms in India which are trying to create this solution. I have been interacting with a lot of them right now. So I can say that they are working on it, and slowly and steadily you will see such solutions out in the market. So that is it for basically, you can say, but there are other rules as well in the finance. Like, first of all, like you do your equity research or mergers and acquisitions. Similarly, you do your research in digital assets. So this is one of my job role, which is there, where I go ahead and I research about blockchains and other digital assets to ensure or to tell my clients whether that is a proper investment to where they can invest, or that is something where they shouldn't be investing in something like that, and whether they should be going ahead with any mergers and acquisitions, and if they should be, what is the model that they should be adopting, and what is the pricing and everything that you have to bring up. Second is product development. Being a financial person, when new products in the market now which are coming, they're already out there. So you will have to go ahead and you will have to tell the companies, okay, this is a product
which can be developed, where you can go ahead and where you can take better returns and all those things. Imagine yourself as those mutual fund guys and all those people who are coming in and telling you that you can invest in here and you can invest in there. So that is what is product development. Third is blockchain consultants. Like I've already told you, different types of blockchains that are there. You have to consult which blockchain to adopt or whether blockchain to adopt or not. Then crypto tax experts. So basically taxation is one of the biggest difficulty here. Why? Because taxation is very tedious here, very tedious here. Why? I'll tell you. Because first of all, there are partial holdings. You do not get the complete, you can say, let's say in equity market you get one share. Now here you can have partial holdings. Second is, in equities, when you transfer your funds, you get there is a proper documentation and everything that is happening. Now in blockchains, you can transfer from one place to another, from one exchange to across the globe, anywhere, and that's something which is very difficult to go ahead and to compute at that point of time. And again, there are very lesser rules and clarity there. So on a normal basis, where you go ahead and if you file the normal income tax return, which is like 500 or 1,000 or 2,000 rupee for an individual, I pretty much almost get 15 to 20,000. That's the minimum that I get if I go ahead and I particularly file the taxes for these people. And node validators, again, something right now is not getting developed that much. So I'm not going to focus on that. Second is last one is treasury manager. So treasury is basically like you in normal treasury, you go out and bring returns. Here, this is the decentralized finance. So decentralized finance, you go ahead and bring the returns. I've discussed this a lot in my course, which is there on decentralized finance, and this is something which right now also I am doing. So all these things are there where I get returns for corporates as well. So a lot of things are there. Again, there are internships opportunities as well. So if you are a student who is yet to complete his professional certification and everything, so you can go for internships as well. And these internships are not something which will pay you like 1,000 or a 5,000 or a 6,000 rupee. They pay you very good. And to prove that, I brought a snapshot with me, which is like where you get 3,000 DAI per month for a 6-month internship. So that's like 18,000 DAI, and one DAI is equals to $1. So $18,000 for a 6-month internship. So the job opportunities are immense, the potential is immense, and the revenue or the amount of money that is flowing, because the people are very less in India. There are not even 1,000 people who can make you understand properly what exactly are blockchains and how do they work. So basically, a lot of demand that is there, the supply is very less, and one of the most lucrative field if you want to enter and you want to venture into blockchains as of now. So with that, I will conclude my presentation here. And one more thing before I conclude is basically Indian paradigm. So a lot of people come ahead and say India mein kuch nahi ho raha blockchain ke upar. So this is one sector which is like public sector, which is like the governments. So in this map, you can see more than 50% of the states are working on blockchain solutions. ये तो सरकार work कर रही है. Individuals, companies are definitely working, but this is the government working on blockchain. So people, if they are saying that India में blockchain के ऊपर कुछ नहीं हो रहा, there are a lot of initiatives across the whole India which are happening. So don't be fooled by comparing blockchain with cryptocurrency or Bitcoin and feel like India में तो अभी कुछ हो ही नहीं रहा है, उसमें तो ban हो जाएगा. This is not an opportunity for me. Understand one thing, that there is something called a digital distributed ledger technology, which is DLT. That's like an ocean. From that ocean comes out a river, which is a blockchain. And from that river, if you draw out a mug of water, that is this Bitcoin and cryptocurrency. So there are a lot of use cases of blockchain that are being used and that are emerging from day in, day out. So don't feel that this is something where you will not be getting something like that. So a lot of new technologies, a lot of use cases are something that are coming in here, and which you can go ahead and which you can understand, and you can create a good future here. I personally am creating that, so that's why I can say it's not something I've not done, and I am saying, okay, hey, kuch hota hoga wahan pe. This is something which I am right now working on. I'm earning and everything that is there. So that is something I can go ahead and I can say that this is something where a lot of opportunities, literally a lot of opportunities are there, and there are not even, if I talk about the chartered accountants community, there are not even 100 professionals who can go ahead and who can say that I know what exactly blockchains are. So there's a very big demand. I can promise you that there's a very big demand. So with that, I conclude. ओके, थैंक यू सर. कोई क्वेश्चन तो नहीं है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ही बहुत ही नया है लोगों के लिए भी, स्पेशली हमारे डोमेन में. नया का मतलब न्यू ये नहीं कि इंडस्ट्री में नया है, हमारे लिए नया है, क्योंकि आप तो सीए हैं, तो आई होप सो पुराने प्रोफेशनल्स को भी देखे होंगे.
उनकी वर्किंग स्टाइल को भी देखे होंगे, कंप्यूटर चलाने से लेके एक्सेल चलाने। ये तो ब्लॉकचेन की आप बात कर रहे हो, तो मतलब चांद पे जाने जैसे जो रॉकेट अभी टेस्ला ने ये एक्स ने बनाया है, उस हिसाब से ये सोचने वाली बात है हमारी फैटर्निटी के लिए कि हम चांद पे पहुंच गए हैं और ये ब्लॉकचेन यूज कर रहे हैं। यंग लोग नो डाउट कि थोड़ा बहुत कुछ चीजों को समझते हैं, जानते हैं, और वही लोग कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग अगर आप देखें तो ओटीटी पे काम कर रहे हैं। मतलब मुझे ये तो पैंडेमिक ने लोगों को ओटीटी समझा दिया, अदरवाइज हमें तो OTT समझाते हुए थक जाते थे। लोगों को समझ में नहीं आता था कि वो ओटीटी क्या है, कैसे है। तो ब्लॉकचेन का भी वही मामला है। वो तो कहें एक क्रिप्टो करेंसी है, बिटकॉइन है, जिसने कम से कम अवेयरनेस फैला रखा है। अगर ये शायद बिटकॉइन नहीं होता ना, तो ये फिर तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने थे। आप किसी को कितना भी समझाएं, वो समझने वाला नहीं होता। सो बिटकॉइन अपने आप में, क्योंकि जो जो थोड़ा बहुत भी जानता है वो बिटकॉइन के बारे में कहीं ना कहीं थोड़ी इन्फॉर्मेशन कहीं ज्यादा और कम रखता है, और उसकी वजह से ब्लॉकचेन लोगों को आप कह सकते हैं कि एक अवेयरनेस फैल चुकी है, लोगों को थोड़ा पता है। बट फैटर्निटी में मुझे नहीं लगता है कि इतनी जल्दी एडॉप्टेबिलिटी है हमारे यहाँ। हम बहुत ही रिजिड हैं, और बहुत ज्यादा रिजिड हैं, और जो पुराने प्रोफेशन है वो बहुत ही ज्यादा है। तो लेकिन नो एक चीज डाउट। है, मतलब अगर आप कंपेयर करेंगे ना इसको स्टॉक मार्केट से कंपेयर करिए। आप अगर आपको याद हो या आपने किसी से पूछेगा, जब स्टॉक मार्केट में जब ये डिजिटलाइजेशन हुआ था, तो बहुत सारे लोग आए थे, उन्होंने कहा था हो ही नहीं सकता, ये तो होएगा ही नहीं, हम तो करने ही नहीं देंगे। और जितने लोगों ने अडॉप्ट कर लिया था वो ये आज तो टॉप पे बैठे। ये तो बहुत बेसिक चीज है। जब आप देखें, मैं हमेशा कहता हूँ, बिस्लेरी को लेके कहता हूँ, अगर बिस्लेरी का बुक पढ़ेंगे ना, तो जब बिस्लेरी इंडिया में आई थिंक कि 26-27 साल पहले आया था, तो नो डाउट उसका अपना विजन रहा होगा। उस विजन में लोगों ने कहा, जिस देश में गंगा, यमुना, सरस्वती जैसी नदी होंगी, क्या कभी कोई बोतल का पानी पिएगा? आज हम पानी भूल गए हैं, हम बिस्लेरी बोलते हैं। अगर पानी चाहिए तो हम बिस्लेरी। तो कहने का मतलब एडॉप्टेबिलिटी आती है, लोग चेंज होते हैं, बट इट विल टेक टाइम। इतना आसान नहीं होता है जितना आसान हम सोचते हैं। और कहीं ना कहीं उस हिसाब से चीजों को आपको मैप करने की जरूरत है। नो डाउट टेक्नोलॉजी में बहुत पोटेंशियल है, अगर आप उस पर काम कर रहे हैं, चीजों को समझते हैं, और अगर आप उसमें आगे बढ़ते हैं, तो कोई लिमिट नहीं है। स्काई इज द लिमिट। टेक्नोलॉजी में तो ये मामला है। खैर, इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप करें। ऐश्वर्या हमारे साथ हैं और उस पर वो कुछ कमेंट कर सकते हैं। आई थिंक कि उनसे भी हमारा कनेक्शन में कोई इशू आ रहा है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स। और हम फिर से कुछ सीरीज लेके आने वाले हैं, आप देखते रहें। और इनकम टैक्स में अभी हो सकता है हम वो कह सकते हैं लगभग 16 से हम शुरू कर रहे हैं। अभी तक मैं ये कह सकता हूँ कि इंडिया का सबसे बड़ा इनकम टैक्स का सीरीज शुरू होने वाला है, और उसमें लगभग 16 प्रोफेशनल होंगे, अक्रॉस इंडिया होंगे, 40 वेबिनार होंगे। तो वेट एंड वॉच, स्टे ट्यून विद टैक्स फॉर वेल्थ। हमारे पोर्टल पे जाएं, हमारे ऐप को डाउनलोड करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इस तरह की चीजों को कुछ गोविंद जी, ऐश्वर्या अब हमारे साथ है नहीं। आई थिंक कोई नेटवर्क इशू आ गया है। अगर वो होते तो मैं जरूर, क्योंकि मैं तो इस पे कोई कमेंट करने से रहा, और मुझे ये बिटकॉइन ऐसे भी समझ में आता नहीं है, तो इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। राय सर, वी विल ट्राई कि हम कोई दूसरा सेशन करें जितनी जल्दी हो। अभी तो फिलहाल आज का एक सेशन था, अगली बार भी हम कुछ ना कुछ इस पे लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।